अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। Assalamualaikum Assalam. Assalamualaikum sir. Assalamu alaikum. We should wait for 5 minutes at least.
अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. So should we start? Yes, sir. Okay. वालेकुम सलाम जी सर, स्टार्ट कर लो। जी, जी। वालेकुम सलाम सर, कर लें स्टार्ट। So, yeah. Okay, this was a slide where we left in last class. सर मेरा एक क्वेश्चन था लास्ट क्लास में से जी जी। कि इलेक्ट्रोपोरेशन से सर हम्म। जब हम लोगों ने कॉम्पिटेंट सेल बनाने हैं तो अगर हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है और हमारे पास एक ऐसा बैक्टीरियल सेल है जिसके पास कैप्सूल भी मौजूद है या सेल वॉल मौजूद है, तो सर क्या इलेक्ट्रोपोरेशन के जरिए हमारे पास उसे भी कॉम्पिटेंट बनाया जा सकते हैं या उसे हमारे उसके लिए हमें दूसरा अल्टरनेटिव मेथड यूज करना पड़ेगा? नहीं, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। कैन यू रिपीट प्लीज? मतलब सब मेरे पास एक माइक्रोब है, मतलब कि वो मेरी रिसर्च के लिए आइडियल माइक्रोब है, मैं उसे बनाना चाहता हूँ कॉम्पिटेंट। जी जी। लेकिन उसमें एक इशू है, ये है कि वो जो है वो कैप्सूल भी रखता है और साथ सेल वॉल भी है उसकी। ठीक है। तो क्या मैं इलेक्ट्रोपोरेशन के जरिए उसे कॉम्पिटेंट बना सकता हूँ? जी, असल में ये दो मेथड्स है ना। पहले जो है ना वो साल्स के थ्रू और वो यस हीट सर। शॉक के थ्रू ट्रांसफॉर्म होंगे। सेकेंड, इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन इज कंसिडर्ड मोर इफेक्टिव देन द अदर अल्कली मेथड्स ना। असल में इसमें इस तरह है ना कि मैं जब खुद काम कर रहा था, खासकर ये जो एग्रोबैक्टीरियम है, दिस इज हार्ड टू ट्रांसफॉर्म। ये नॉर्मल उससे नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फिर मोस्टली इलेक्ट्रोपोरेशन ही करवाए जाते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू ट्रांसफॉर्म करवाए जाते हैं ये। इलेक्ट्रोपोरेशन से कॉम्पिटेंट करने के लिए भी एक और मेथड है, उसके थ्रू पहले उन सेल्स को बनाया जाता है, ट्रीट किया जाता है और फिर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है। ओके सर। जी, so electroporation is better option for every types of cells. तो अक्सर सेल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं वैसे। So this was a slide where the transformation of plants and the transformation of plant cells through agrobacterium.
So how it is how naturally the plants are transformed with DNA of any of the bacterial cell. So the red, you can see the red part of the plasmid from the agrobacterium is transformed to the plant chromosomal DNA, and that is integrated there. This is actually now the part of the plant chromosome. So the region that is transformed and integrated into the plant chromosome is known as transfer DNA. Only this red part will transform there. So this is known as transfer DNA. And this plasmid is known as tumor inducing plasmid, because this is going to produce this tumor like structure, and that is at the base of the plant, and that region is known as the crown. So and that will be induced, and this will induce the bacteria through the phenolic compounds that will be really released through the wounds, and these wounds will release phenolic compounds, and they will activate, they will induce bacteria that are living within the soil there. So this is how things go in the nature. And after that, if we can see this TI plasmid, so this TI plasmid has this transfer DNA, the one that has been shown red in there, and that transfer DNA has mainly two parts. The first one is this region, and the transfer DNA region, and that region has been flanked with the two terminal repeats, and this one is the left terminal. So this region is known as left terminal repeat, and this one is a right terminal repeat, the two that has been shown in purple. So these two repeats, when were seen, they have similar region except for these steric one. So that has this T, G, and then this one nucleotide is different between the two, and then the remaining is same, and this is these three are different. So these four nucleotides, except these four nucleotides are same, so they are repeat sequences. This one is repeated here in this one, so this sequence is repeated in there in this sequence. So this will be the left, on the left will be known as left terminal repeat, and this will be known as right terminal repeat. And in between these two repeats, anyone there, any gene present there will be transformed and integrated into the plant genome. So this region will be flanked with the two repeats, and that this region will be integrated into the plant due to these terminal repeats. So after that, when it was seen that what is present in there in this transfer DNA, so there were genes known as tumor-inducing genes. So this will cause a tumor to produce, and also there will be a gene known as NOS gene. We will be studying these two in detail later on. So this will be nuclein synthase gene. So this will produce carbon source for the bacteria. So this will produce that, and there in the plasmid there will be NOC. So that is nuclein catabolism gene. So this will catabolize these carbon sources. So this whole plasmid will be present in the bacteria. So the bacteria can produce now this carbon source for it, and it can catabolize that with having these genes. When this region is integrated into the plant, so the bacteria can grow there and can catabolize the carbon source, unless and until if that is present there. So if the bacteria is not there, the plant cannot catabolize this nuclein synthase carbon source. So this carbon source cannot be synthesized by plants. Only the bacteria can synthesize that. So other than these things, there is a region known as origin of replication. You already know this before, and there is a region known as vir gene. So these virulence genes
this region will be activated, and this is the actual region which is activated due to the phenolic compounds. In the phenolic compound, they will activate this region, and this will activate the whole thing, and this will activate then the bacteria to infect the wound sites. So, and this is specifically the plasmid. If so, P is for the plasmid, tumor inducing plasmid, and this specific type cell of cells is C58. So C58 is also being used in transformation as well. So this cell line is used in transformation as well, normal plant transformation. So this is a tumor-inducing plasmid. So transfer DNA is tDNA is the transfer DNA, and this is transferred and expressed in plants, causing tumor, and that will be crown gall formation. And then there will be virulence genes, and they are essential for the transfer and integration of the transfer DNA. And there will be another region known as origin of replication. We have talked about that. So NOC, opine, catabolism genes are there. So these genes, other microbes do not have this gene. So genes within the transfer DNA, we also have talked, but we have talked that this will be tumor inducing. So the tumor inducing genes are actually, what are they? They will be actually auxins. So auxins will be, in this case, this will be indole-acetic acid, and auxins, they induce the cell to divide, usually the rooting of plant that occurs through auxins. So this will induce cell enlargement and cell division of plants, actually plant cells. So and there will be, so these are actually growth regulators. They both are growth regulators. Auxins, and this is cytokinins. So in cytokinins will be for shooting, and they will induce shooting, as well as they will induce the cell division. So these two types of genes, they will be present in this region. So other than the and this, so when these genes are present in this region, and this region is transformed into the cells, so this will induce the cells to divide, and to divide rapidly, and that will make tumor-like region in there. So other cells will not divide, and these cells, they will induce the cells to divide. So that's why the tumor will like structure will be produced. So these genes for the synthesis, so there will be genes, so NOS genes, so there will be genes for the synthesis of opines. So there will be a carbon source for the bacteria, and cannot be utilized in plants. And these tumor genes will be responsible for tumor formation, and this is actually how it looks like. So this is the opine catabolism genes. This is the origin of replication, the virulence genes, left border, right border, and the auxins, cytokinins, and the opine synthesis genes. So this is how the transfer DNA is. So this is the transfer DNA region, and the rest of the thing, and the whole plasmid is known as, this will be the tumor-inducing plasmid. So next is, if you can see, this is infection of plant cells, how they infect plant cells. So bacteria attaches to the host. So this will be the first step. And the virulence genes expression activated by compounds secreted by wounds. And this transfer DNA is transferred then. And after that, tDNA, this transfer DNA that integrates into the host plant cell DNA. So this will be integrated into the host plant cell DNA. So, and the other transfer DNA genes are activated, causing tumor-inducing tumor formation. So, and after that, this is you can see. So transfer DNA is cut out of the plasmid at these two regions. So this will be cut out from here, and that will be integrated into the plant genome. So how we can engineer this? Actually, this is what we are at now.
And why we are studying that? Because we can manipulate and we can integrate our own gene of interest on, at these sites. So we can replace this auxins, cytokinins, opine, because we don't need them. So we can replace these things with our own gene of interest. So clone foreign DNA gene in and the tDNA. So what has been made? So we have replaced this region with multiple cloning sites so that multiple genes can be cloned so genes could be cloned at that multiple cloning site. So we have restriction sites within here. So we have replaced this thing with multiple cloning site. Along with we can add some marker in there, and we have some marker in this plasmid in this region. So we have now two plasmid. One is for the bacterial selection, and the other one is for the plant selection. We will be gonna and discuss this thing in detail later on in these slides. So starting with, so we should clone foreign DNA into the transfer DNA. So in this region, we will be having clone our foreign DNA of our gene of interest. So we will clone it there. And next is delete gene responsible for tumor formation. So we will delete these genes so that they are producing tumors, and we don't need tumors. We don't need abnormal cell division. We need a normal cell division. So we will remove these things. So by removing these things of the tumor inducing genes, so by removing this, we are gonna disarming these plasmid. So these plasmid will now be disarmed, even though there will be virulence genes. So we will disarm this plasmid by removing these tumor inducing genes. So we will be deleting these, and we will add a selectable marker within there, so to select the plant. So once this is transformed, this region is transformed into so if we can see it here, so we need a plasmid, we need a selectable marker. So when we have a selectable marker in there and a gene of interest, it will transform into a plant cell. So we need to select only this type of cell and not the normal cells. So how we can select? Based on the antibiotic or another marker. So based on that marker, we will select only these types of cell, and we will gonna induce these type of cell to divide in other and other. We will select only these types of cells, are we will having the media to select for us. So we will this is the requirement, that we have a selectable marker there, or a screenable marker. Anything can happen, and that depends on our objective. So we will be having a selectable marker there. Also we will be having a marker in here. So we will having a marker here, so that we can only select this type of bacteria having this plasmid. So this is for the plasmid, for the bacterial selection, and here another marker for the plant cell selection, for the transformation selection, transformed cell selection. So after that, if we can see, we were here. Okay, so add selectable marker. So selectable marker will ever added, and after that, a biolistic approach. So we have talked about Agrobacterium. Up till now, any question regarding Agrobacterium? सर आपने प्लांट सिलेक्शन मार्कर्स की बात की जी जी सर, इस पे थोड़ा सा बताइएगा। हम प्लांट सिलेक्शन मार्कर्स जी, असल में इस तरह है कि जो प्लाज्मिड हमारे पास है ना, दिस वन, इसमें इसमें हमारे पास ये प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड को हम पहले डिसआर्म करेंगे। मींस आजकल तो ये तैयार रेडीमेड आते होते हैं ना, तो उसको डिसआर्म प्लाज्मिड कह रहे होते हैं, क्योंकि उनसे ये जीन्स जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स हैं ये निकाल दिए जाते हैं। एंड ये निकाल के वहाँ पे मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी है। मल्टीपल क्लोनिंग साइट की जगह पे हम
जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना मल्टीपल क्लोनिंग साइट MCS, ठीक है। सो MCS में हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं। उसके साथ जो एक और जीन हमारे पास होता है दैट विल बी सेलेक्टेबल मार्कर, लाइक यहाँ पे कैनामाइसिन का जीन है, so we can add so there will be a gene known as kanamycin, like अगर हमारे पास kanamycin का जीन है, so that will be kanamycin gene like here. so अगर ये kanamycin जीन है और इस kanamycin जीन को अक्सर लोग आप अगर कोई प्लाज्मिड देखेंगे और उस पर लिखा होगा NptII लिखा होता है या NptI, लेकिन मोस्टली NptII लिखा होगा। सो NptII जीन जो है वो दिस विल बी फॉर द kanamycin जीन। सो दिस ये kanamycin का जीन है, ठीक है। सो आपने ओके, सो दिस विल बी रिटन इन ऑन प्लाज्मिड का जो मैप है आप जब देखेंगे वहां पे लिखा होगा kanamycin, और यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे आपका रीजन है, इस रीजन को कहते हैं MCS। सो दिस विल बी द मल्टीपल क्लोनिंग साइट। सो इस मल्टीपल क्लोनिंग साइट पे आपके पास डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साइट्स होंगे। सो इन रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, लाइक मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ इंसुलिन जीन। सो इंसुलिन जीन को मैंने ऐड किया और वहां पे इंसुलिन जीन को मैंने ऐड किया एंड दिस जीन हैज बीन एडेड देयर, एंड इंसुलिन जीन को मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब इंसुलिन जीन मेरे पास है, उसके बाद एक और जीन है kanamycin जीन, और उसके बाद जो है इस प्लाज्मिड को, असल में प्लाज्मिड को देखना बहुत जरूरी है, इसको अंडरस्टैंड करना। यहाँ पे ये निकाल दिया जाता है, ओपाइन कैटाबॉलिज्म के जीन निकाल दिए जाते हैं और कुछ और जीन्स ऐड किए जाते हैं, लाइक यहाँ पे एक जीन ऐड कर दिया गया है और ये जीन है एम्पिसिलिन जीन। ये अब ये प्लाज्मिड मेरे पास है, और हाँ, इस प्लाज्मिड को अगर इसका अगर फॉर इंस्टेंस नाम है, लाइक इसके डिफरेंट नाम होते हैं, लाइक हमारे पास लाइक है एक सीरीज है पीकैम्बिया प्लाज्मिड है, और पीकैम्बिया ये सीरीज है एंड दिस इज पीकैम्बिया 1300। ये मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि इसी तरह ये सीरीज के नाम होते हैं। आप ये प्लाज्मिड देख रहे हैं एंड दिस इज नोन एज पीकैम्बिया 1300 प्लाज्मिड है ये, ठीक है। आपने जब इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया है तो आपने करना क्या है, इसको अगर ये पीकैम्बिया 1300 है, आपने नेट पे सर्च करना है पीकैम्बिया 1300 किस तरह है, तो वो बिल्कुल आपको इस तरह नजर आएगा। आपने यहाँ पे इसमें इंसुलिन ऐड कर दिया है, मींस यहाँ के रिस्ट्रिक्शन साइट्स देख के ना, उस रिस्ट्रिक्शन साइट्स को यूज करके आपने इंसुलिन जीन को एम्पलीफाई करके उसमें वो रिस्ट्रिक्शन साइट्स ऐड करके हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो वो इसमें ऐड कर दिया। नाउ आप इस प्लाज्मिड को क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक स्लैश लगाएं और यहाँ पे लिखें यहाँ पे इंसुलिन, ओके। यहाँ पे आपने लिखना है, यहाँ पे this will you write here like this will be, यहाँ पे आपने लिखना है स्लैश करके इंसुलिन। So this will be insulin, and this is your whole plasmid, and now this is the plasmid for you. So this is pCambia 1300 in insulin. This will mean that insulin gene is now integrated in the at the MCS side, and this is how people are doing working with this plasmid. So अब आपने करना क्या है, ये प्लाज्मिड आपके पास बैक्टीरिया में है,
तो आपने इसको कौन से मीडिया पे ग्रो करना है, आपने इस प्लाज्मिड के बैकबोन को देखना है। इसमें एम्पिसिलिन जीन है, तो आपने मीडिया में एम्पिसिलिन जीन को एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक को ऐड करना है, ताकि हमारे पास सिर्फ वो बैक्टीरिया ग्रो करें जिसमें एम्पिसिलिन जीन है। ठीक है, अब नेक्स्ट, जब हमने प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन कर ली है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेफ्ट और राइट बॉर्डर से ये एक्साइज होके इंटीग्रेट कर गया है प्लांट के जीनोम में। So in the plant genome, there will be no this backbone. This will be not there. Only this region will be there. So if this region is there, that will mean the kanamycin gene is there. The NptII gene is there. So if there is NptII gene, so we need to grow the plant cell on kanamycin antibiotic. So उस मीडिया में हमने kanamycin को ऐड करना है, प्लांट के सेल को हमने kanamycin पे ग्रो करना है, और जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनको हमने एम्पिसिलिन पे जो ग्रो करना है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, होल क्लास, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, so sir. okay, so that's good. So we will be going further, and let me clear the annotation. Okay, so next is our next job is to talk about Biolistic. Somebody, I think Hassan has asked about Biolistic, or Biolistic, what about the gene gun, how we can do that. So I left that question for the end, and that is actually Biolistic. So that this the Agrobacterium one is only to treat the plant cell with the Agrobacterium, and the Agrobacterium has the plasmid, and the Agrobacterium will transform that plasmid. So we need to co-culture the plant cell along with the Agrobacterium, and this will do things for us. But for Biolistic approach, if we don't use Agrobacterium, we have another approach, and that is Biolistic microprojectile bombardment approach. And through this, we are going to use gold. We coat gold or tungsten particles with the DNA, and this DNA we need to transform. So the first step is to coat these particles with the DNA. So once we coat them, after that we shot with the particle gun through cell wall of the plant cell. So by shooting these gold or tungsten particles, so what will happen? This DNA will pass the cell wall and the nucleus, and will be reaching the nucleus, and there will be integrated into the DNA most probably. So after that, best to use is why we use this Biolistic approach. In this case, we will. सर हम ये जो सा डीएनए करेंगे, कोड करेंगे, गोल्ड पे डीएनए कोड करेंगे, या मतलब गोल्ड नीचे होगा, डीएनए उस पे कोड करेंगे, या डीएनए के ऊपर गोल्ड को कोड करेंगे? ओके, हम जो है अली रजा, हम इस तरह करेंगे कि दिस गुड क्वेश्चन। हमने गोल्ड के पार्टिकल्स लेने हैं, ठीक है, गोल्ड के पार्टिकल्स लेकर हम उसको कोट करेंगे विद द डीएनए। दैट मींस द डीएनए पार्टिकल्स विल बी बाउंडेड विद द गोल्ड पार्टिकल्स। सो द डीएनए जो है ना, वो गोल्ड पार्टिकल के सरफेस पे कोट होगा, मींस दैट विल बी बाउंड टू द सरफेस। और गोल्ड पार्टिकल का काम सिर्फ ये है टू डिलीवर द डीएनए टू द न्यूक्लियस, क्योंकि ये हार्ड एंड वेटेड है, सो इट कैन बी डिलीवर इजीली टू द न्यूक्लियस। ठीक है, ओके सर। सो और इसमें हम डीएनए कितना यूज कर सकते हैं, लाइक स्मॉल प्लाज्मिड अप टू लेस देन 10 kb। सो 10 kb से कम अगर प्लाज्मिड है, वी कैन बेस्ट यूज देम इन दी बालिस्टिक अप्रोच। लीनियर डीएनए इंटीग्रेशन, सो लीनियर डीएनए जो है हम उसमें नहीं कर सकते एग्रोबैक्टीरियम में।
So if it has linear DNA, अगर हमारे पास linear DNA है and we want to integrate that thing in the genome, so linear DNA तो हम plasmid में clone करना पड़ेगा ना Agrobacterium के लिए. So another approach is for the Biolistic से हम इससे linear DNA को directly transform कर सकते हैं उसमें cells में, ठीक है, cells को transform कर सकते हैं through Biolistic. हमने just उसको nucleus तक पहुंचाना है. So through Biolistic. So this is how we do things with the Biolistic bombardment. And this fourth one is the advantage क्या है? Large range of plant particles, plant species can be engineered. So Agrobacterium के limitations हैं, and that limitation is Agrobacterium can only infect dicot plants. Dicot की समझ आ रही है ना? Dicot का क्या मतलब है? टू कोटिलेडन्स मतलब ऐसे प्लांट्स हैं जी. So उनका अगर सीड हम देखें तो सीड के दो कोटिलेडन्स होंगे, दो पार्ट्स होंगे, and the embryo will be there, and this is how the dicot looks like. अगर हम उसके डाइकोट प्लांट है, अगर हम प्लांट हमारे पास सीड नहीं है और हम उसके प्लांट के लीफ को देखें तो लीफ will be broad shaped, और मोनोकॉट के लीफ किस तरह होते हैं? So मोनोकॉट हमने प्लांट बायोडाइवर्सिटी नहीं पढ़ी इस तरह, तो अच्छा. कोई So आइडिया मैं जस्ट ये बता देता हूँ, जस्ट ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, ये कॉमन सेंस है, इतनी वो नहीं है, जस्ट यू डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा साइंस फॉर दिस, और उसमें आपको इसमें कोई बुलेट साइंस नहीं चाहिए, जस्ट सिंपल मैं बता देता हूँ आपको. अगर मोनोकॉट और उसमें डिफरेंस करना हो ना, तो यहाँ के इसके जो वेन्स हैं, this will be web like shape. इसके the veins of the leaf will be web like shape, and the veins here in the monocot, this is monocot. So this is monocot plant, and monocot में क्या है? So monocot के सीड में एक ही कोटिलेडन होता है, और इस कोटिलेडन को हम कहते हैं एंडोस्पर्म, और यहाँ पे this there will be embryo there, and this is the monocot seed, और उसका ये monocot plant है. इसमें जो veins हैं लीफ में, they will be parallel to each other, ये parallel होंगे सारे, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर. एंड इसमें क्या होंगे कि वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे. एक मिड रिब है, दरमियान में मेन वेन, और मेन वेन के साथ फिर सारे वेन्स निकले होंगे इस तरह, और वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे. तो दिस इज द डाइकॉट, द डिफरेंस बिटवीन द लीफ ऑफ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सीड ऑफ द प्लांट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स. थर्ड, जो अगर हम इसके रूट सिस्टम को देख लें, रूट्स में दिस विल बी हैविंग, यहाँ से रूट्स, सारे रूट्स निकलेंगे यहाँ से. सो इस रूट सिस्टम को फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं. सो दिस इज फाइब्रस. तो फाइब्रस रूट सिस्टम है, एंड सो फाइब्रस रूट सिस्टम है, और यहाँ पे जो डाइकॉट में है, यहाँ पे एक मेन रूट है, एंड इस मेन रूट से फिर रूट्स निकलते होते हैं. सो दिस रूट सिस्टम इज नोन एज, फिर यहाँ से दूसरे रूट्स निकलते होते हैं, एंड दिस रूट सिस्टम इज नोन एज टैप रूट सिस्टम. क्योंकि एक टैप रूट है, दिस नोन एज टैप रूट. सो दिस इज नोन एज टैप रूट. सो अगर आपके पास टैप रूट सिस्टम है, सो अगर आपके पास सिर्फ रूट्स हैं, सो फ्रॉम द रूट्स यू कैन आइडेंटिफाई दिस इज मोनोकॉट और डाइकॉट. तो रूट से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मोनोकॉट है या डाइकॉट है, लीफ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मोनोकॉट है या डाइकॉट है, और सीड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मोनोकॉट्स हैं या डाइकॉट्स हैं. इवन यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम द फ्लावर, अगर फ्लावर है तो उसके जो पेटल्स हैं, तो उसकी नंबरिंग से तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो है ये डाइकॉट का फ्लावर है या मोनोकॉट का फ्लावर है. सो these things we can differentiate between monocots, but
why I am talking about this is that the agrobacterium जो है वो most of the cases जो है वो only dicots को infect करते होते हैं. हम means कि हम dicot plants को transform कर सकते हैं with the agrobacterium. Dicot plant जो है हमारे पास कौन से हैं, like pea plant है, dicot. हमारे पास जो अक्सर trees हैं, like we have in the in this area tropical regions में हमारे पास जो trees हैं अक्सर वो dicots हैं. हमारे पास monocot में maize, rice, wheat, so they are what, they are monocots. So wheat हमारे पास monocot है. So you can search them and you will find these things. So ये जो है एग्रोबैक्टीरियम जो है वो सिर्फ हमारे पास डाइकॉट्स को ट्रांसफॉर्म करेगा. इवन दो आई हैव ट्रांसफॉर्म मोनोकॉट द व्हीट विद एग्रोबैक्टीरियम, लेकिन वो बेसिकली that is for the dicot. The dicot can be easily transformed and monocot is a bit recalcitrant for the agrobacterium. Biolistic approach जो है ना वो we can transform large range of plant species. हम इसको भी transform कर सकते हैं, इसको भी transform कर सकते हैं with agrobacterium very easily. So after that, so this is one of the advantage of using a biolistic approach. And after that, इसकी समझ आ गई है? इसी है? Yes, sir. Okay, so another we have a short video, and this is very professional video. I found that to visit you in some lab and to have you a virtual visit, having you a virtual visit in the lab. So how this is actually a biolistic gun. So how this biolistic gun actually works. So rather than telling you how it works, so it's better to that you should have the first-hand idea. आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है वीडियो की आपको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's good. The Biolistic PDS-1000 helium system uses high-pressure helium released by a rupture disk and partial vacuum to propel a macrocarrier sheet loaded with gold or tungsten microcarriers towards target cells at high velocity. The microcarriers are coated with DNA or other biological material for transformation. The macrocarrier is halted by a stopping screen.
The DNA-coded microcarriers continue traveling towards the target to penetrate and transform the cells. Connect one end of the 6-foot tubing to the helium pressure regulator. Tighten the connection. Connect the other end to the inlet valve of the 3-way helium valve assembly. Tighten the connection. Connect one end of the 2.5-foot tubing to the outlet port of the valve assembly. Tighten the connection. Connect the other end to the PDS 1000 unit. Tighten the connection. Plug the power cord of the 3-way helium valve into the rear of the PDS unit. The vacuum hose assembly is already connected to the port on the rear of the unit via the clamping assembly. The free end of the vacuum hose assembly must be connected to the vacuum source. Set the distance between the rupture disc retaining cap and the microcarrier launch assembly. Release the set screw. Assemble the microcarrier launch assembly. Insert the fully assembled microcarrier launch assembly on the highest slot within the chamber. The set screw on the white plastic shelf should face outward. A 1/4-inch distance is recommended for initial experiments. Take the 1/4-inch hexagonal adjustment tool and place it into the gap. Turn the adjustable nest until the macrocarrier cover lid touches the gap tool. Fix this setting by tightening the set screw. Each macrocarrier is washed with isopropanol to remove static. Placed inside a macrocarrier holder using the seating tool. The macrocarriers, along with the stopping screens, launch assembly, and rupture disc retaining cap, can be sterilized by autoclaving. Gently resuspend the gold DNA pellet by tapping the side of the tube. Pipette and spread 6 microliters of the DNA-coated microcarriers evenly over the central centimeter of the macrocarrier. The macrocarriers should be coated in a low humidity environment with the minimum of vibration to minimize agglutination. A suggested method is to place the macrocarrier in the holder into a petri dish containing desiccant. The ethanol should evaporate within 10 minutes, and the macrocarriers should be used within 2 hours. Switch on the unit using the on-off switch on the control panel. Select a rupture disc of the desired burst pressure using sterile forceps. Briefly wet the rupture disc in isopropanol and place it in the recess of the sterile rupture disc retaining cap. Screw the retaining cap onto the end of the gas acceleration tube. Tighten the retaining cap with the torque wrench. To use the torque wrench, insert the short end of the metal rod into an accessible hole in the retaining cap. Push the long end of the rod to the right until the stainless steel rod touches the inner surface of the black tube.
Prepare the microcarrier launch assembly. Place a sterile stopping screen on the stopping screen support. Install the macrocarrier holder containing the loaded macrocarrier on the top rim of the fixed nest. The dried microcarriers should be facing down towards the stopping screen. Replace the macrocarrier cover lid on the assembly and tighten. Place microcarrier launch assembly in the top slot inside the bombardment chamber. Place the target shelf at the desired level inside the bombardment chamber. Place the sample on the target shelf. Close and latch the chamber door. Place the prepared macrocarriers with the DNA gold side facing up into the macrocarrier holder. Ensure that they are in place using the seating tool. Place a stopping screen in the stopping screen holder. Fit the macrocarrier holder onto the stopping screen holder. Place the rupture disc into the round recess in the top of the 7-arm gas divider. Please note that as the gas is split 7 ways, a higher psi rupture disc is needed than used with the conventional PDS 1000. Take the upper part of the adapter and screw it onto the gas acceleration tube inside the chamber. Firmly twist the small upper ring. Tighten using the torque wrench by inserting the short end into one of the holes. Loosely screw the top of the 7-arm gas divider into the parts already inserted into the chamber. Slide this macrocarrier shelf assembly into the second shelf position with the 7 holes of the macrocarrier holder facing up. Line up the 7 pressure outlets with these holes. Tighten the lower ring. Place the sample on the target shelf. Close and latch the door. If this is the first use, test fire once to fill the gas tubing with helium. Evacuate the chamber. Turn on the vacuum source. Set the vacuum switch on the main unit control panel to the vac position. Evacuate the chamber to the desired level, at least 5 inches of mercury. The fire switch on the right side of this panel will be illuminated when this minimum vacuum is achieved. When the desired vacuum level is reached, hold the vacuum at that level by quickly pressing the vacuum control switch through the middle vent position to the bottom hold position. Press and hold the fire button continuously until the rupture disc bursts and the helium pressure gauge drops to 0. A small pop will be heard when the rupture disc bursts. The helium pressure gauge on top of the unit will act as a guide, but the rupture disc used will be the pressure that is released. Release the fire button immediately to avoid wasting helium. Release the vacuum from the chamber by setting the vacuum switch to the middle vent position. Open the chamber door and remove the target cells from the chamber. Remove the microcarrier launch assembly. Unscrew the lid and remove the macrocarrier holder. Unload and discard the macrocarrier and stopping screen. Unscrew the rupture disc retaining cap from the gas acceleration tube. Remove the remains of the rupture disc. Okay, so any question up till now?
सर ये मैक्रो कैरियर क्या चीज़ है? हाँ, मटेरियल है कोई? असल में इसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं कि टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल्स को हम जो है वो हम कोट करते होते हैं। गोल्ड पार्टिकल्स को माइक्रो कैरियर्स कहते होते हैं, ठीक है। और जिस शीट पे हम उसको कोट कर रहे हैं, मीन्स के गोल्ड को हमने कोट कर लिया अभी डीएनए। नाउ उसके बाद हमने एक उस पे वो करना है किसी सपोर्ट पे, उसको सपोर्ट पे हमने उसको डाल के उसको वो कैरी करना है। उसको हम मैक्रो कैरियर कह रहे हैं। सो दैट विल बी मैक्रो कैरियर एंड द गोल्ड पार्टिकल विल बी द माइक्रो कैरियर ऑफ द डीएनए। ठीक है। सो एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. ओके। Yes, sir. So this is how gene gun works. So now there are certain reporter genes are the selectable markers. So within the plants, we can use neomycin phosphotransferase gene, and that is NPT, and that will be for resistance to kanamycin. And the second selection is through this Gus gene. So beta glucuronidase, and this enzyme convert colorless substrate to blue product. So when you have blue product, that means that thing has been transformed with that gene. So this is the marker gene. So this marker gene, by having this marker gene, we know that our gene of interest also have been transformed there probably. So this is the second marker, and third is usually use Luciferase gene, and there's glow in the dark. So that was taken from the firefly, and this gene was taken from there, and this has been now used in as a marker gene in plants. So this plant also glows in the dark. So we use different UV lights in there, and we get the inflorescence, and we have these things. So these are the three mostly used selectable markers. So herbicide resistance is one of the application of this of GMOs. So Roundup, this is a marketable product, and this is in the market, and there is debate on this glyphosate. So glyphosate is actually this is a product of Monsanto company, and has happened. I got some problem with the slides. Sorry. So these are the three main reporter genes people usually use as a markers. So after that, you have heard about Monsanto. Monsanto recently, the UK people, I think they have more demonstrations, demos, and they come up in the streets against this company because of their GMO products. So and specifically the glyphosate, this gene is known to have some function in cancers. They induce cancers, and the products having and the plants having glyphosate. So soybean and these type of things, these type of crops, they are induced with glyphosate, and there are some risks associated with glyphosate. But there are certain papers that shows that
there is nothing like that, and research has been showing that this cannot be linked with the cancers. But anyways, the glyphosate, what it actually do, this inhibits the enzyme necessary for amino acid production. So amino acid production, this will inhibit the the enzyme production. So, and specifically the aromatic सर आपने स्लाइड्स शो की हुई हैं तो नजर नहीं आ रही हमें. आपको नजर नहीं आ रही? Wait. अभी शो हो रही है? Yes, sir. Okay, so the glyphosate, this inhibits enzyme necessary for amino acid production, and it inhibits an essential part of plant enzyme called EPSPS. So ये enzyme जो है ये inhibit करता है, and when glyphosate is there, this will inhibit this enzyme. And this enzyme, what it will be doing, it prevents production of inhibition of this enzyme. This is for aromatic amino acid. Aromatic amino acid जो है ये enzyme जो है aromatic amino acid के production के लिए use होगा. So when this enzyme is inhibited, the aromatic amino acid will not be producing there. So if that aromatic amino acid will not be produced, so those plants cannot grow. So glyphosate is used to inhibit the aromatic amino acid production. So what happens? So this will kill weeds. So when we apply glyphosate, it will kill weeds. So weeds are the unwanted plants. So, but for the crop? So by modifying crop genes for the amino acid production. So now amino plant में क्या किया गया? प्लांट में इस जीन को चेंज किया गया. इस जीन को चेंज करके इसके पाथवे को अगर हम देखें तो इस पाथवे को चेंज किया गया. इस पाथवे को जब चेंज किया, so the glyphosate cannot work on this thing, the crop. This cannot damage the crop, but it will damage the normal plants, and the normal plants will be weeds there. So we only grow transgenic crops. Transgenic crops को हम grow करेंगे, that will be resistant to glyphosate, but the weeds are not. So when we apply glyphosate, the weeds will be eradicated. Only the crop plants will grow. So, but disadvantage क्या है? Disadvantage is the spiders, the earthworm, and fishes. So they will be killed through the use of this glyphosate. So Monsanto company what they are doing? They are selling us the transgenic crops. Also, they are selling us the glyphosate to use to eradicate weeds. So both products we are dependent on the company. So this is how things are, but this is the disadvantage of so this is the environmental protection. This is against the environmental protection. So the unwanted effects also are there, and unintended effects are there. So other consideration, so cross pollination. So if these crops are transgenic crops are grown, and they can pollinate the weeds, so of the same species. So they can pollinate, and the pollens of these transgenic plants, the pollens will also contain the transgenic genes. So they can go in the wild and then can pollinate other species, and they can escape and they can go in the wild. So what will happen then? So well, herbicide application really be reduced. So this will give rise to resistant weeds. So if the gene has been transferred into weeds unintentionally, and those weeds are now resistant to this glyphosate. So now in the glyphosate they can grow. So now this herbicide, this glyphosate, rarely this reduce the herbicide and the herbs. So the weeds, it really reduce that. So in long run, no, it will not reduce that. So, and it will have environmental concerns also.
So a second application, so this was the first application of the genetically modified plants, and the second application is सर ये दोबारा से जरा okay. सर जी सर ये दोबारा से जरा मतलब तो ये जो हमारा ग्लाइफोसेट है ये प्लांट की ग्रोथ पे इफेक्ट होती है। तो ये जो कंपनी है ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बना रही है जो कि मतलब जिन क्रॉप्स पे इस ग्लाइफोसेट का असर नहीं होता, इस तरह से बना रही है। हाँ, इस पॉइंट समझ में आइए। जी ठीक है। अच्छा, ग्लाइफोसेट की तो समझ आ गई कि ग्लाइफोसेट का काम क्या है, ठीक है। ये तमाम प्लांट्स को, इसकी ग्रोथ को ये रोक देगा क्योंकि ये अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। सो उसके प्रोडक्शन को बाय इनहिबिटिंग दिस जीन। तो अब किया क्या कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए गए, उसमें इस पाथवे को चेंज किया, ठीक है। ये अब इस जीन को यूटिलाइज नहीं कर रहा ये मॉडिफाइड प्लांट्स जो है, ठीक है। जब इस जीन को यूटिलाइज नहीं कर रहा तो इट मींस कि जब हम ग्लाइफोसेट अप्लाई करेंगे तो दूसरे प्लांट खत्म हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेनिक प्लांट ग्रो करेंगे। असल में इशू ये होता है कि जो वीड्स हैं, वीड्स के बारे में आता है कि ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं विद इन आवर क्रॉप्स, they can reduce 25% of our yield to some estimates, 10 to 25% yield वो reduce करते होते हैं। तो उसके लिए हम herbicides use करते हैं। तो this is one of the alternative कि अगर हम modified plants use कर लें और हम glyphosate use कर लें, ठीक है। तो glyphosate जब use करेंगे तो तमाम सारे के सारे जो प्लांट्स हैं दूसरे वो खत्म हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ट्रांसजेनिक क्रॉप प्लांट्स रह जाने हैं जो उस ग्लाइफोसेट में ग्रो कर सकते हैं। सो फिर ओके, सो जब ये ग्रो करेंगे बाकी सारे प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। सो दिस इज व्हाट this is meant for. So the company is selling glyphosate to us to apply for as a weedicide. Also it is selling the transgenic plants to us, transgenic seeds to us. So the farmers are dependent on the company to purchase the seed as well as to purchase the this chemical, so this herbicide. So लेकिन अब इसके disadvantages क्या हैं? Disadvantages ये हैं कि ये जो unintended constituents हैं environment के, like the earthworms, spiders, fishes, they will also kill with the glyphosate. Another thing के दूसरे considerations क्या हैं? Cross pollination means pollen जो हैं, pollen grains जो हैं, they will be having the genes of the plant, so they will be also transgenic. So pollen grains जो हैं they can go into the wild और वहाँ पे इसके wild relatives के साथ ये pollinate कर सकते हैं, fertilize कर सकते हैं. So that means the gene, the transgene go into the wild और अब हमें नहीं पता कि वो जीन कहाँ कहाँ तक जाएगा और how it will affect the environment. ये भी देखा गया कि इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये जब ट्रांसजेनिक प्लांट्स है वहां पे देखे गए कि इवन हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर आल्सो कैन बी occurring there. So the gene like the resistance genes, so इस जीन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इन्होंने रेजिस्टेंस जीन्स भी यूज किए, मार्कर जीन्स भी यूज किए गए हैं. तो ये मार्कर जीन को देखा गया था कि दे वर आल्सो बी प्रेजेंट इन द फिशेस, in the fish community, in the fish ecosystem. तो फिश में भी देखा गया कि उसमें ये जीन मौजूद है. How it can go from a plant to a fish, so nobody knows that, but this is what has been published and what has been occurring there in the nature. So this is the major concerns that by manipulating or by changing the natural things, it can go into the environment and into unknown measures, into unknown ways it can go. And second, ये जीन जब weeds में जाएंगे, the weeds are now become transgenic. Weed भी transform होंगे due to the pollens, and now these weed will be resistant to glyphosate as well. So in the long run, well, when
Is there it is really applicable? So no, it cannot be really applicable in the long run, because it cannot reduce the weeds from the fields. जी जी सर मैंने पूछा था कि हमने हमारी क्लास का टाइम खत्म नहीं हो गया? क्लास का टाइम खत्म है, ठीक है। नहीं ओके, सर, कहते हैं तो 2 घंटा भी पढ़ लेते हैं, कोई इशू नहीं है। नहीं ठीक है, एक नेक्स्ट में पढ़ लेंगे, नो वरीज नो वरीज, दिस इज योर टाइम ना। नहीं सर, दरअसल ना पता नहीं सर दर्द की जरा कब से, मैं समझ भी नहीं आ रही है कुछ। अच्छा नो वरीज। सर मैंने बात करनी थी आपसे। जी जी सर वो मेरी असाइनमेंट नंबर 2 के सर क्विज वाले मार्क्स नहीं लगे हैं। खदीजा, आप क्विज नंबर 2 के मैं देखता हूँ। जी असाइनमेंट नंबर 2 सर। जी क्या? असाइनमेंट नंबर 2 के आंसर क्वेश्चन वाले मार्क्स मिलेंगे। हाँ मैं देखता हूँ, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है, नो वरीज। Okay, so attendance sheet is shared with you? No sir. No sir, no sir. So today is 25. So Aisha Lodhi है, Aisha है, Aisha is there? सर उसका इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम था आज। आई थी वो? जी सर। Okay. So Ali Raza is there, आज तो है ना? अली रजा है? सर था। Okay, Sehri Saeed. यस सर। Okay, and Kokab Imran is there. Hassan Raza. Yes sir. Okay, Huma Majid. Present. Okay, Solat. Present sir. Durre Ramisha. सर वो प्रेजेंट थी। सिमरा आरिफ, ठीक है, सिमरा आरिफ। Present sir. एंड मरियम। मरियम नहीं है, एब्सेंट? यस सर, है थी मरियम। जवेरी अरशद। यस सर, प्रेजेंट। महनूर। प्रेजेंट सर। खदीजा। Yes sir. लाइबा ताहिर। Present sir. सवेरा। Yes sir. वजीहा। वजीहा है? जी सर। प्रेजेंट है। ओके। ताबिश। यस सर। समैया। Yes sir. सिदरा नूर। सिदरा नूर है? ओके, एंड मारू खालिद। सर प्रेजेंट। ओके, सो निम्रा। प्रेजेंट सर। नोमान अजीज। प्रेजेंट है सर वो। ओके, सो एंड आफ्टर दैट अदीन खान। यस सर। अफीफा। आफाक। प्रेजेंट। शहजादी सखी। सर प्रेजेंट है वो, उसका माइक का इशू है। महनूर खान। Present sir. आयशा जमान। Present sir. जैनब हयात। एंड रोहा अहमद। Sir present है ना? Present sir. ठीक है, रोहा अहमद। Present.
Maria Usmani Present. and Javeria Iftikhar. Arish Mateen प्रेजेंट है, उसका माइक present है, ठीक है. Arish Mateen. फैसल बशीर. सर उसका भी नेट का इशू है, रीच का भी नेट का इशू है. ओके ठीक है. अफजाल यूनुस. सर उसका डिस्कनेक्ट हो गया. ठीक है. रेशमा. प्रेजेंट सर. राफे. नईम is there. नईम है. कामरान भट्ट. सर उसका इंटरनेट चला गया था. Okay. अम्तुल रहमान. Present sir. वो है, ठीक है. Okay, and सज्जल वकास. प्रेजेंट सर. And Zain Abbas. Zain आया हुआ? Yes sir, present. Okay. So today absent is Naeem absent है. अफीफा जुल्फिकार absent है. सर अफीफा प्रेजेंट है, उसका माइक ऑफ है. Okay. So and सिद्रा सर नूर. जैनब हयात भी प्रेजेंट है. सिद्रा नूर. सर वो प्रेजेंट है, उसका नेट बंद हो गया. ज़ैनब हयात present है and सिद्रा नूर present है. Okay and okay so नईम आज absent है. Okay. So thank you so much all of you. See you in the next class. बात करनी थी. जी जी. सर आपने लिमिट जो रिव्यू की है 4000 एक्सीड कर सकते हैं. क्या किया? लिमिट रिव्यू की हमारी केस स्टडी में आपने 4000 वर्ड्स रखी हुई है. तो अगर ऊपर जा रहा हो तो हम क्या जा सकते हैं? हाँ ऊपर जा सकते हैं बिल्कुल. That is the minimum limit ना. सर मुझे एक इशू आ रहा था जो आपने मुझे जनरल रिकमेंड किया है, उसमें रिसर्च आर्टिकल जो है उसके 3000 वर्ड्स उन्होंने दिए हैं, बट जो रिव्यू एंड आर्टिकल है उसमें उन्होंने कोई मतलब खास गाइडलाइन नहीं दी. लिमिट नहीं दी. बिल्कुल 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 बिल्कुल. लेकिन नॉर्मली लोग ये करते हैं कि उसका कम से कम मिनिमम लिमिट होना, वरना इसके अगर इससे कम होना तो फिर लेटर टू एडिटर या इस तरह की चीजें फिर आ जाती हैं. सर 3 to 4000 आपकी आवाज कट रही है, मुझे अब आ नहीं रही. जी आप बताएं. मैं 3 to 4000 वर्ड्स इनफ होंगे. हाँ हाँ बिल्कुल इनफ. सर 3 to 4000 वर्ड्स इनफ होंगे सर. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. दिस राइट, दिस ट्रू. एक्सक्यूज मी सर, एक मेरा भी क्वेश्चन था असाइनमेंट से रिलेटेड. जी जी. उसमें आपने जो मेरा टॉपिक है ना, उसमें मुझे रिसर्च आर्टिकल्स नहीं मिल रहे से रिलेटेड, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसमें फिर क्या आगे कंटिन्यू क्या करना. उसमें टॉपिक क्या है? टॉपिक है कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल मैकेनिज्म ऑफ कोरोना वायरसेस इन होस्ट एंड वेक्टर्स. ओहो, तो आप फिर सिर्फ नॉन कैनोनिकल कर लें या सिर्फ कैनोनिकल कर लें और कोरोना वायरस या किसी और वायरस का ले लें. तो कोई समझ आ रही कि कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल होता क्या है, क्योंकि जब मैं सर्च कर रही हूँ तो वो मतलब आता नहीं है उसमें. ओके, सो कैनोनिकल ये है ना कि ऑलरेडी साइंस इज लाइक मैं आपको जस्ट एक वो बता दूं कि लाइक हमें पता है कि कैप जो है इज इम्पोर्टेंट एंड पॉली ए टेल इज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसलेशन. कुछ वायरसेस जो हैं लाइक मैं किसी वायरस पे काम कर रहा हूँ, उसमें पॉली ए टेल भी नहीं है और कैप भी नहीं है. सो दिस विल बी नॉन कैनोनिकल के लोग जो ट्रेंड्स हैं उससे चेंज है ये चीज. सो दिस द वायरस विल हर एक वायरस में तकरीबन हर एक वायरस में डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं. तो मेरा मकसद ये था कि हम सिर्फ उसको फोकस कर लें कि नॉन कैनोनिकल चीजें क्या हैं या कैनोनिकल इसमें क्या है, कि नॉर्मल के साथ हैं या एब नॉर्मल है. जो एब नॉर्मल नहीं कह सकते, इट मींस के दैट विल बी नॉर्मल फॉर दैट वायरस,
लेकिन हमारे लिए वो न्यू होती है ना कि दिस इज फॉर इंस्टेंस कोई एक बंदा किसी एक वायरस पे काम कर रहा है, दूसरे का नहीं पता, लेकिन अगर कोई इस तरह कंपाइल करके कोई बना दे कि दिस इज द नॉन कैनोनिकल थिंग्स विद इन दिस वायरस, so this will be more interesting, more attractive and more easy to publish. तो इसके ओके लिए सर। आपको जी जी आपको उसके मैकेनिज्म्स को पढ़ना पड़ेगा, वहां पे फिर आपको मिल जाएंगे कि ये कैनोनिकल है, नॉन कैनोनिकल है, क्या चीजें हैं ये। ओके सर, मैं ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को सर्च करूँ उसकी? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके पॉलीमरेज को देख लें, उसके जीनोम को देख लें, ठीक है। तो आपने उसकी जीनोम की बायोलॉजी को एक्चुअली देखना है। ओके सर, थैंक यू सर। सर वो एकदम मेरे नोट कर लें प्लीज। हाँ वो मैं देखता हूँ, वो यहाँ एक मिनट में देखता हूँ खदीजा के यहाँ पे है। हाँ आपका मेरे पास यहाँ पे नहीं है। एंड अगर मैं यहाँ पे देख लूँ असाइनमेंट्स में, असाइनमेंट 2 है ना? जी जी सर सही। आपने मुझे भेजा ही नहीं है। सर मैंने आपको भेजा था। कब भेजा था? सर आप किया था। एक सर वो मिनट जो मैंने डायरेक्ट पूछा था आपसे। देखें ये आपको शेयर हो गए ना, ये देखें मेरे पास ये असाइनमेंट्स लोगों के। एंड अच्छा आप लोग अभी है ना, एक चीज याद रखें, मैं सोच रहा था कि मैं किसी वक्त डिस्कस करूं या पूरी क्लास होगी तो कम से कम फाइल को नाम देना तो सीखें, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आप किसी को कोई फाइल सेंड कर रहे हैं तो कम से कम उसमें तो ये हो कि असाइनमेंट है, क्या है, किसका है, नाम आपका हो ना, ठीक है। तो ये चीजें इम्पोर्टेंट है ये। जी जी ओके। इसके सो ऊपर ना इस वजह नहीं लिखा था खदीजा, मैं देख लेता हूँ, मैं ईमेल चेक कर लेता हूँ ना, शायद मुझे मिल जाए, नो वरीज, ठीक है। आई विल चेक वंस, ठीक है। ठीक है। एंड स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।